All right, hi guys, welcome back to this MBA podcast. मेरे साथ है सोनू. सोनू is from Altera by the way. मैंने सोनू का बहुत बारी जिक्र किया था मेरे YouTube चैनल्स में. He was with C2C last year. बंदे ने आई एम जम्मू छोड़ा, मेरे ख्याल से बोध गया, सिरमौर या फिर संबलपुर जैसे बेबी आइम्स छोड़े, एंड ही ज्वाइंड Altera लास्ट ईयर. ये सबसे बड़ा शॉकिंग चीज था जब मैं उसे मिला कैंपस में. आई वाज लाइक यार बेबी आइम छोड़ के तो Altera है, बिकॉज Altera के बारे में तभी हमें भी नहीं पता था. एंड इट्स अ न्यू एज बी स्कूल, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वगैरह वगैरह वगैरह. सो अभी बहुत अच्छा हुआ इसका. ही इज गॉट इनटू वन ऑफ द गुड कंपनी एंड पैकेज भी बहुत बढ़िया लगी है. बीबी एम्स के एवरेज से बहुत ज्यादा अच्छी पैकेज लगी है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. बट सोनू, मेरा पहला क्वेश्चन है तुम्हें यार. बहुत सारे बच्चे ना आईएम्स को लेके एक्साइटेड होते हैं. इवन बीबी आईएम्स हमें पता है, दो दे आर डूइंग डिसेंटली ओके, बट इट टेक्स करेज और इट टेक्स दैट टैलेंट और अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैं बेबी आई एम जैसे जम्मू वगैरह छोड़ के मैं ऑल्टेरा ज्वाइन करना चाहता हूँ. मैं पहले बात तो ये है कि समझना चाहता हूँ तुम्हारा थ्योरी किस बेसिस पे तुमने ऑल्टेरा ज्वाइन की. इफ यू कैन आंसर मी दैट क्वेश्चन. श्योर केतन सर. सो द ये इनको मैं तीन चीज़ों में बताना चाहूँगा. The three things that were influencing my decision during this time. First one was the ROI that was there of Altera compared to any BBIMs. It is much more higher than any of the BBIMs that are there. Second one was my before exposure at NIT Andhra Pradesh. I was there during that time also. I knew what goes on in a legacy school, so I didn't want that again. I didn't want just a tag for myself. I needed the skills that are essential for this day to day new age industries that are coming up, the e-commerce space that is blowing up. उसके लिए that for that reason I wanted relevant skills. And third thing, personalized mentorship that was there. At any legacy school you won't get, you can't talk to a director asking ये इसको मैं कैसे solve करूँ या real life problems क्या होते. So based on that, these three things I felt that Altera was the right choice compared to any BBIM that I had. You know what, Sonu, मैं I certainly respect your decision and मैं ना अपने वीडियोस में काफी बार ये कहता हूँ कि when you do MBA right, हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच या फिर वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. जैसे you're from NIT, right? So people from IITs, NITs, visit EI हो गया बॉम्बे में. These are pretty good UG colleges. जैसे हमारे कॉमर्स में हम बात करें सिम्बायोसिस, एसआरसी वगैरह वगैरह. सो मैं ऑलवेज कहता हूँ इफ यू आर अ स्मार्ट वन यू विल ऑलवेज चूज स्किल सेट एंड आउटपुट ओवर एंड अबव ब्रांड ऑफ अ बी स्कूल व्हेन इट कम्स टू एन एमबीए. डेफिनेटली अगर आप ब्लैकी जा रहे हो, एफएमएस जा रहे हो, एसपी जैन जा रहे हो, जमनालाल बजाज जा रहे हो, तो बात बहुत अलग है बिकॉज दिस आर लाइक टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. बट एज यू सेड लाइक बीबीएमएस के ऊपर आई चोज ऑल्टेरा बिकॉज आई वाज सीकिंग फॉर दैट स्किल सेट व्हिच आई रियली अप्रिशिएट. सो मैं ऑलवेज कहता हूँ मेरे वीडियोस में कि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो टैग को छोड़ के एक स्किल सेट की तरफ चलते. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड when you talk about skill sets, right? What sort of skill set you were looking at? और वो ऑल्टेरा ने आपको कैसे वहां पे वो गैप फिल इन किया? Also, you spoke about mentorship. थोड़ा बता देना कि ऑल्टेरा का एक कल्चर कैसा है. I mean, I've been there, I've interviewed a lot of students, I know. But when you say that, being as a student, I want you to talk about कि तुम्हारे directors, founders approachable है क्या? And also do mention their profile as well. And ये तुम्हें कैसे help किया तुम्हारे placement? Sure. So at Altera, most of the time we were taught all the real world problems that were there. उनको कैसे approach करना है. That was the main part there. I know most of us feel like things that are there, they are very complex, but actually in real life they are not. आपको complex when you are able to break complex things into simple forms, that's when they are applicable. Or else complex चीजें कोई in real world they are never applicable. So that first thing that was there, that I had a perception that if you want to be something great, you have to be very complex. But Altera broke that perception for me, and how to make things simple. That was the first thing. And second thing that Altera has taught me was first principles thinking. No matter where you go, what you do, first principles are basic. You just have to think in all the possible directions. Like
कंसल्टिंग में भी एक वर्ड होता है मीसी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. सो इन दैट अप्रोच यू शुड थिंक, ताकि कुछ छूट ना जाए और सब कवर हो जाए. सो दैट वाज really something. And how to go in such a flow that eventually you will get to the correct output. That was another thing that has been engraved in me by Altera. And coming to the mentorship that is there, most all the mentors that are there are really helpful. So most of our subjects that are there are taken by Alex sir. So he's from HUL, and yeah, he has worked in HUL. I don't know, 7-8 साल से काम करा है शायद उन्होंने वहाँ पे. I don't know the number. And he's an IIM alumni. So the way he teaches stuff, the way he tells you each, like छोटी छोटी चीजें होती है that you don't feel that you don't feel कि this is very important, but he shows the magic in small stuff that yeah, if you would have done this, it would have led to such a big impact. So that was there. And sure, another great guy is Karan sir. So he also helps lot, most of the time to By us. the way, just to give you guys a little idea, Karan sir is also one of the co-founder of Altera. A Yeah, yeah. guy, I think, brain behind Surf Excel. He managed around about 300 crore का budget for Surf Excel. And जो हम ads देखते थे ना बचपन में Surf Excel की जो TV पे आती थी, he was the brain behind that, and an amazing guy. And I believe Karan sir is from FMS, if I'm not wrong. Yeah, correct. Go ahead, go ahead. And even there were sometimes that छोटी छोटी सी चीजों को लेके you get self doubt, like most of the times in during placement prep, right? When you don't get shortlist, when you don't feel to give another interview, that time how you should conduct yourself, how you should pick up yourself and go again, वो सब how you should push yourself, that too is also they help. Like I remember in instances where Arshdeep sir has helped me most of the time in my interview prep. And Shagun ma'am also, that were there. By the way, Arshdeep sir is also from FMS, and Shagun ma'am was working in Goldman Sachs last. हाँ. So yeah. एक्चुअली यहाँ पे ना ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि व्हेन यू हैव फोक्स फ्रॉम इंडस्ट्री जिन्होंने 10-15 साल वहां पे काम किया है, एंड जब उनका आपको एक्सेस मिलता है तब तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत अलग हो जाता है, बिकॉज यू आर लर्निंग एग्जैक्टली जो चीजें आपको जाके कॉर्पोरेट में करनी है, एंड दीस पीपल हैव डन दैट. सो आई मीन इन माय इंडस्ट्री, इन माय लैंग्वेज आई वुड से कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, सो आपको किताबें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकती है, नो डाउट अबाउट दैट. बट समबडी हु हैज स्पेंट 10 इयर्स और 15 इयर्स इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसने डीलिंग करा है, जिसने तुम्हारा ट्रेडिंग वगैरह सीखा है, अगर आप उनके साथ बैठ के चीजें सीखते हो, आपका लर्निंग कर्व काफी ज्यादा शार्प होता है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर Altera gives an advantage. Now, tell me one thing, when you talk about, एक ट्रेडिशनल MBA अपना होता है, आई एम वेरी श्योर तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे बेबी IIMs में, NIT वाले बहुत सारे IIMs में चले जाते हैं. I'm very sure you must be having some folks in Baby IIMs or New IIMs or any other B schools. तो जब आप करिकुलम देखते हो कि केतन सर उनको वहाँ पे ये चीजें पढ़ाई जाती है, हमें यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई जाती है. So can you give me little idea कि Altera का जो टीचिंग का फंडा है वो ट्रेडिशनल MBA से कैसे अलग है और वो इफेक्टिव क्यों है? Sure. So first of all, we'll talk it in this way कि the top IIMs that are there, then Altera is there, and then the Baby IIMs that are there. ये तीनों लोग अलग अलग क्या कर रहे हैं? Because I had my friends both in IIM ABCs also and this Baby IIMs also. So at ABC, at any top B schools that are there, वहाँ पे the people input is so good that people there are so good that even if they don't do even if the institute don't do anything, they will still manage to get into some very decent jobs that we can say. And in normal school, in not so good schools that we would say Baby IIMs and all those stuff, wahan pe the people that are there, they are on par with us. I don't feel that there is any much more difference between them and us in terms of the IQ, or we can say the exposure that they have got. So at that point of time, you require something. If you want to ग्रो, आप ग्रो कैसे कर सकते हो? या तो आप खुद से ग्रो कर सकते हो, या तो फिर आप किसी और की हेल्प लेके ग्रो कर सकते हो. दैट टाइम इफ यू रियली वांट टू ग्रो, आई फील दैट जिसने सब करा है कंपेयर्ड टू जो जिसने सिर्फ रटा रटाया ज्ञान पढ़ा है, दैट द गाय हु हैज डन मोर
who has gained from experience, I would say he has more preference compared to any other person that is there. Like freshers के हिसाब से तो preference is given to more experienced person. So here what Altera has helped us, like all those experience that are there of the people who have worked in top industries, be it HUL, be it Goldman Sachs, or be it any consulting firms, like even Arshdeep sir is from EY. So each the real life problems that are there, जो आती है, that is completely different from what you study at any B school or any stuff. At आप कहाँ पे भी पढ़ लो वो, unless and until you don't know the nuances of particular things, you won't be able to solve that. Can For you that, give some example जहाँ पे एक आध सब्जेक्ट आपको जो पढ़ाया जाता है, मे बी समथिंग टू डू विद द डिजिटल वर्ल्ड, या फिर समथिंग टू डू विद ई-कॉमर्स, कुछ yeah, ऐसी yeah. चीजें बता पाओगे कि केतन सर ये एक्सक्लूसिव है और ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही है, मतलब ये इंडस्ट्री में होता है, ये बी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हमें पढ़ाया जाता या तो कोई भी बी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि रोएस क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, एंड अनदर थिंग कि जब आप व्हेन यू आर डूइंग अ बी टू बी बिजनेस, बी टू बी सेल्स जब आप कर रहे हो, इन दैट हाउ यू आर ड्राइविंग द सेल्स में भी आप आपके छोटे छोटे नुएंसेस दैट इज देयर, द डिस्कवरी कॉल्स दैट वी मेक मोस्ट ऑफ द टाइम, वो प्रैक्टिस कैसे करने चाहिए, किससे करने चाहिए, लाइक अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस दैट यू वोंट गेट द हैंग ऑफ इट. सो वो सारी चीजें और इन केस ऑफ ई कॉम दैट इज देयर एज ब्लिंकिट, ई कॉम क्या क्विक कॉम ही बोल सकते हैं अभी उसे, quick com that is there. So how Blinkit works, how Amazon work, how sorry Zepto works, how Instamart work, yeah, वो सब भी that you should know if you want to get into a job that you are, if you are working in Blinkit, Zepto, or any new age this quick com that is there, उसके लिए you have to know about that. Unless and until you know on this lines, how the supply chains work, motherboard क्या, ये मदर वेयर हाउस कैसे चलता है, फिर बाद में डार्क स्टोर्स कहाँ कैसे कैसे लोकेट न होते हैं, all those stuff that is there that है. you should know about. No. So एक चीज तो मेरे भी दिमाग में आई कि जो नई अपनी प्रोफाइल्स है, ई कॉमर्स वाली प्रोफाइल्स हो गई, डिजिटल वर्ल्ड वाली अपनी प्रोफाइल्स हो गई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली प्रोफाइल्स हो गई, कंसल्टिंग वाली प्रोफाइल्स हो गई, उसके लिए आप लोग ऐप हो, राइट? बिकॉज आपका जो फैकल्टी पूल है वो भी तगड़ा है, ठीक है, कूल है. नाउ लेट्स गेट बैक टू योर जॉब. Tell me about your company, your package, and what your job is all about. So I got placed into onedigitalstack.ai, which is a digital shelf which tells about all the stuff that is related to e-com space for any brand that is there. Let me give you an example. Nielsen तो आपको पता होगा, Right. that gives data about how what is your market share, how you are growing, everything on those lines. We one digital stack.ai does that thing only, but for digital space. You can say you can compare it like that. And on the top of that, they provide insights like how a company can grow, and या फिर कुछ फटा है तो what are the reasons why you are going down, or why you are stagnant. So all the insight that are there, which are very actionable and which will give a high impact, that's what the company provides. So So this you is, will be basically helping company to, so you are in the growth function of a company. You're not in the yeah, cost of the, मतलब खर्चे नहीं कर पाओगे कंपनी के. You'll help companies to grow basically, yeah. right? So in a nutshell, Yeah. go ahead. And the ROAS that, sorry to interrupt, and the ROAS that is there of any company, we try to reduce that also. Return So on there are, ad survey. yeah. Okay. Okay. So अगर हमें इसको लेट्स से किसी बकेट में डालना है, कहाँ पे इसको रख सकते हैं? Is it digital marketing? Is it product management? Is it strategy and consulting? Is it program management? Where we can plug in? Strategy and consulting, we can say that, because this is a strategy and Fantastic. Now, straightforward question. Don't mind. Do you think it's worth leaving Baby IIMs and joining Altera? सपने पूरे हुए, जो चाहिए था वो मिला तुझे सोनू? या जो चाहिए था, लाइक मेरी अभी तक की जितना लाइफ एक्सपीरियंस है, दैट एट स्टार्टिंग ऑल्सो आई डेंट गेट इनटू आईआईटीज, तो एनआईटी मिल गया मुझे, वो एक था. अच्छा. फिर बाद में मैंने 3 साल के लिए यूपीएससी के लिए प्रेप किया था, दैट टू डिडंट वर्क, मेंस में अटक जाता था हर बार. फिर बाद में traded in stock market, there got some decent returns, but still didn't
didn't create like I didn't think कि जो चाहिए वो मिला, but everything happens for a reason I feel. And whatever you think, जितने whatever you think I feel कि वो उतनी ही दुनिया नहीं है. There is lot more to explore, and जो उससे भी better चीजें मिल सकती है. So and for me most of the thing that most important thing that I feel is whenever I grow, right, whenever I learn new things, that gives me a kick कि यार ये कुछ बढ़िया सीख लिया, ये कुछ अच्छा. And the impact that I'm creating right now, that is much more compared to what I feel कि if I would have joined Baby IIM, तो वहाँ पे क्या बोलते बैंक रिलेशनशिप मैनेजर बन के रह जाता आई फील. सो कंपेयर टू दैट हियर आई वुड आई फील कि whenever I'll talk to more people, whenever I'll see numerous industries, वो opportunity I don't feel that वहाँ मुझे मिलती. So I am really happy about that. True that. You know, I'll share an experience with you. You know, when I was 22, I was in US. I was working on Wall Street for a lot of Fortune 500 companies in the world. जो तुमने बताया ना कि इसके बाहर भी दुनिया होती है. So वहाँ पे ना we were working on the stock option, and I was so much excited. I was like, यार ये बड़ी चीज है ना, इसको करते हैं, इसमें फाड़ देंगे वगैरह वगैरह वगैरह. And when I got back to India, I started talking to my mentors, and फिर मेरे mentors ने कहा कि भाई अच्छी बात है जो तुम कर रहे हो, ये बट ये काफी नीश है. फाइनेंस बहुत बड़ी चीज है. Yeah. तब दिमाग खुला कि भाई फाइनेंस में तो तुम्हारा डेरिवेटिव होता है, वैल्यूएशन होता है वगैरह वगैरह वगैरह. सो हाँ, ये चीज होती है कि जो हमें लगता है कि भाई यही हमें करना है, ऐसा नहीं होता. जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. सो आई कैन रेजोनेट विद द फैक्ट कि हाँ, इधर से मुझे आईआईटीज नहीं मिले, ये नहीं मिला. मुझे लगता था जो मुझे करना है, बट आई थिंक जो भी होगा वो मुझे आगे लेके जाएगा जिंदगी में. सो या डेफिनेटली वन सेकंड, आई थिंक मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा, परफेक्ट. ठीक है, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू. देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना एंड पेरेंट्स होते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ. आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी एक मेंटेलिटी होती है कि हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाना काफी पसंद होता है. सो वहाँ पे आईएम्स आते हैं, और मैं ये ओपनली कहता हूँ कि आगे जाके अगर कोई भी आईएम नया आता है, बच्चे ब्लाइंडली चले जाते. यू बीइंग अ यंग गाय, राइट, क्या एडवाइस करना चाहोगे बच्चों को? स्किल सेट पे फोकस करें बच्चे या ब्रांड के ऊपर फोकस करें? व्हाट विल बी योर टेक? I तो any day will pick skill set on the brand जो brand ही मिलता है. Because see industry, the real life that how it works. Starting में आपको एक first job जो आपकी मिलेगी वो आपके you will get it on brand based. But उसके बाद क्या? What you will do? How are you performing versus any other person that is there? उसका for that what is needed the most. I feel True that हाँ वो देखना चाहिए. And second thing, it all at the end it boils down to like where you are comfortable. Like I had this many options. Out of that I felt Altera was best. If I had got ABCs तो surely ABCs में ही चला जाता मैं. ऐसे कोई ये नहीं बोल रहा हूँ मैं. Yeah. सुन, ऑल्टेरा But वाले तुझे कहते हैं कि भाई तू एबीसी चले जा. For sure, that's for sure. yeah, I would have gone because it's like relatively आप जो आपके that your conditions that are there, the things that you have converted up till now, on the basis of that only you have to take decisions, right? So I feel choose the best what works for you. For me I feel that unless and until if if I'm prepared for some stuff beforehand itself, I feel that gives me an edge. So that's why I thought Altera has that, and so I joined Altera. सबके अलग अलग आइडियोलॉजीज हो सकती है. किसी को ये ज्यादा लग सकता है कि लोग ही मतलब द कनेक्शंस दैट यू गेट वो भी अच्छे हो तो उससे भी हो जाता है. I'm happy for the fact that you were with us, you were part of C2C, and I am happy and at the same time surprised also that you have this thought process in a good way, by the way, because बहुत सारे बच्चे ब्रांड के पीछे भागते हैं, but actual growth तभी होती है जब आपके पास एक skill set, and I'm glad that you chose skill set over and above brand and it paid off very well. जो इंडस्ट्री में आप जा रहे हो वही आने वाला जमाना है. अगले 2-3 जो decades है भाई, वो इन्हीं जॉब से भरे हुए हैं. There is no doubt about that. Sonu, wish you all the very best. You made us proud. I'm super duper happy to interview you. And I'm very sure ये वीडियो काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प करेगी. छोड़ना अभी वहां पे भी जाके अच्छे से, and बहुत जल्दी ग्रो कर लेना लाइफ में. Thank you so much. Take care.